जय माता दी। माता रानी की कृपा सब पर यूं ही बरसती रहे। दुर्गा पाठ का ये प्रथम अध्याय है। ओम प्रथम चरित्रस्य ब्रह्मा ऋषि महाकाली देवता गायत्री छंद नंदा शक्ति रक्तदंतिका बीजम अग्निस्तत्वम ऋग्वेद स्वरूपम श्री महाकाली प्रीत्यर्थे प्रथम चैत्र जपे विनियोगः। ओम खंगम चक्रगदे सुचापपरिङ्गाञ्छूलं भुसुण्डिं शिर शंखं सदधतिं कैरिस्त्रिनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां इतस्तैश्च वियञ्चस्त स्मरणमुनिवराश्रमे सोऽचिन्तय तदा तत्र ममत्वा कृष्टचेतना मत्पूर्वे पालितं पूर्वं मया हीनं पूर्वं हि ततः मद्भृत्यस्तैरसद्वृत्तैर्धर्मतः पाल्यते न वा न जाने स प्रधानो मे सुरस्ति सदा मद मम वैरी वसंयात कान भोगानुपलस्यते मे ममानुगता नित्यं प्रसादधनभोजने अनुवृत्ति ध्रुवं ते यग कुर्वन्त्यन्यमहिभृताम् असम्यगव्यशीलस्ते कुर्वद्भिः सततं व्ययं सञ्चितसोऽति दुःखेन क्षयं कोशो गमिष्यति। एतच चान्यच च सततं चिन्तयामास पार्थिव तत्र विप्राश्रमाभ्यासे वैश्यमेकं ददर्श स पृष्ठस्तेनैकस्त्वं भो वेतुर्षगमनेत्रक सशोक इव कस्मात् त्वं दुर्मना इव लक्ष्यसे इत्याकर्णवचस्तस्य भूपते प्रणयोदितं प्रत्युवाच सतं वैश्य प्रस्यावृणोत नृपं। वैश्य उवाच समार्धिनां वैश्योऽमुत्पन्नो धनिनां कुले पुत्रद्वारे निरस्तश्च धनलोभादसाधुभिः विहीनश्च धनैर्धारे पुत्रैरादाय मे धनं वनमभ्यागतो दुःखी निरस्तचाप्तबन्धुभिः सोऽहं न वेद्मि पुत्राणां कुशलात्मिकां प्रवृत्तिः स्वजनानां च दाराणां चात्र संस्थिता किनु तेषां गृहे क्षेमं किनु साम्प्रतां कथं ते किनु सद्वृतां किनु मे सुता। राजोवाच ऐणिस्तो भवां लुब्धे पुत्रदारादिभिर्धने तेषुं कि भवतस्ने मनुबध्नाति मानसं। वैश्य उवाच एवमेतगता प्राह भवानस्मद्गतं वच किं करोमि न बध्नाति मम निष्ठुरता मन सत्यञ्ज प्रीतिस्नेहं धनलुब्धनिराकृत पतिस्वजनहार्दं च हार्दिते स्वेव मे मन किमेतनाभिजानामि जाननपि महामते यत्प्रेम प्रवणं चित्तं विगुणेष्वपि बन्धुषु तेषां कृते मे निःश्वासो दौर्मनस्यं च जायते करोमि किं यन्मनस्त्वे स्वप्रीतिषु निष्ठुरम्। मार्कण्डेय उवाच ततस्तो सहितो विप्रं तं मुनिं समुपस्थितो समार्धिनां वैश्योऽसौ स च पार्थिवः सत्तम कृत्वा तु तौ यथा न्यायं यथाहं तेन संविदम् उपविष्टो कथाकाश्चित्कर्तुर्वैश्य पार्थिवो। राजोवाच भगवंस्त्वामहं प्रष्टुमिच्छाम्येकं वदस्व ततः दुःखाय यन्मीमांस स्वचितायतां तां विना मम त्वं गतराज्यस्य राज्ञाङ्गेष्वखिलेष्वपि जानतोऽपि यथाज्ञस्य किमेतनु मुनिसत्तम अयं च निकृतपुत्रे दारेभृत्यस्थोजिता स्वजनेन च सत्यक्तस्ते सुहार्दे तथाप्यति एवमेष तथाहं च द्वाप्यत्यन्तु दुःखितो दृष्टदोषे अपि विषये मम त्वाकृष्टमानसो तत्कमेतं महाभागा यन्मोहो ज्ञानिनोरपि ममास्य च भवते सा विवेकान्धस्य मूर्ता
ऋषिरुवाच ज्ञानमस्ति समस्तस्य जन्तुर्विषयगोचरे विषयश्च महाभाग याति चैवं पृथक् पृथक् दिवान्धा प्राणिनः केचि तात्रावन्धास्थापरे केचिदिवा तथा रात्रो पाणिनस्तुल्यदृष्ट्या ज्ञानिनो मनुजा सत्यं किं तु तेन हि केवलं यतो हि ज्ञानिनः सर्वे पशुपक्षिमृगादय ज्ञानं च तन्मनुष्याणाम् एतेषां मृगपक्षिणां मनुष्याणां च एतेषां तुल्यमन्यथोभयो ज्ञाने अपि सति पश्येतान् प्रत्याङ्गच्छवाञ्चक्षुषु कञ्चमोक्षादितान् मोहात् पीड्यमानान् अपि क्षुधा मानुषा मनुष्याद् साभिलाषः सुतान् प्रति लोभात् प्रत्युपकाराय नन्वैतानं किं न पश्यसि तथापि ममत्वार्थे मोहगर्ते निपातिता महामाया प्रभावेन संसारे स्थितिकारिणा तन्नात्र विमर्श्य कार्यो योगनिद्रा जगत्पते महामाया हरश्च सा तया सम्मोहते जगत् ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती हि सा बलादाकृष्य मोहाया महामाया प्रयच्छति तया विसृज्यते विश्वं जगदेत चराचरम् सहसा प्रसन्ना वरदां निर्णां भवति मुक्तये स विद्या परमा मुक्ते हेतुर्भूता सनातनी संसारबन्धन हेतुश्च सर्वे सर्वेश्वरेश्वरी राजोवाच भगवन् का हि सा देवी महामायेति यां भवां ब्रवीति कथमुत्पन्ना सा कर्मा सा च किं द्विज यत्प्रभावा च सा देवी यत्स्वरूपा यदुद्भवा तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामि त्वतो ब्रह्मविदां वर ऋषिरुवाच नित्यैव सा जगन्मूर्तिस्तस्य सर्वमिदं ततं तथापि तत्सममुत्परति बहुधा श्रूयतां मम देवानां कार्यसिद्ध्यर्थ मा विभवति सा यदा उत्पन्नेति तदा लोके सा नित्याप्यभिधीयते योगनिद्रां यदा विष्णुर्जगतेर्कारणविकृते आस्तिर्यं शेषमर्ज भज कल्पान्ते भगवान् प्रभु तदा द्वासुरो घोरो विख्यातो मधुकैटभो विष्णुर्कर्णमलोद्भूतो हन्तुं ब्रह्माण्डमुगतो स नाभिकमले विष्णु स्थितो ब्रह्मा प्रजापति दृष्ट्वा तावसुरो जोग्रो प्रसुप्तं च जनार्दनं तुष्टाव योगनिद्रां तामेकाग्रहृदये स्थिता विबोधनार्थाय हरे हरि नेत्रकृतालयां विश्वेश्वरी जगद्धात्री स्थितिसंहारकारिणीं निद्रां भगवतीं विष्णुरतुलां ते स प्रभु ब्रह्मोवाच त्वं सदा हि त्वं स्वाहा त्वं सदा त्वं हि वष्टकारा सुरात्मिका सुधा त्वं क्षरे नित्ये त्रिधा मात्मिका स्थिता अर्धमात्रा स्थिता नित्या यानुचचार्या विशेषता त्वमेव संध्या सावित्री त्वं देवी जननी परा त्वयैतद्धार्यते विश्वं त्वयैतत्सृज्यते जगत् त्वयैतपाल्यते देवी त्वमच्यन्ते च सर्वदा विशिष्टोत्सृष्टिरूपा त्वं स्थितिरूपा च पालने तथा संहृतिरूपान्ते जगतोऽस्य जगन्मये महाविद्या महामाया महामेधा महास्मृति महामोहा च भवति महादेवी महासुरी प्रकृतिस्त्वं च सर्वस्य गुणत्रयविभाविनी कालरात्रिर्महारात्रि मूलरात्रि च दारुणा त्वं श्रित्वमीश्वरी त्वं हि त्वं बुद्धिबोधलक्षणा लज्जा पुष्टिस्तथा तुष्टिस्त्वं शान्ति शान्तिरेव च खड्गिनी शूलिनी घोरा गदिनी चक्रिणी तथा शङ्खिनी चापिनी भाना भूषुण्डी परिघायुधा सौम्या सौम्यतराशेष सौम्य भयति सुन्दरी परापराणां परमा त्वमेव परमेश्वरी यच्च किञ्चित् क्वचिद्वस्तु सद्स्वद्वाखिलात्मिके तस्य सर्वस्य या शक्तिः सा त्वं कि अस्तुवसे तदा यया त्वया जगत्तष्टा जगत् न पात्यति यो जगत् सोऽपि निद्रावसं नित्य
कस्त्वां सोस्तोतुमीश्वर विष्णु शरीर ग्रहण महिमीशानेव च कारितास्ते यतोऽतस्त्वां कस्तोतुं शक्तिमान् भवेत् सा त्वमिततं प्रभावेश्वरी दुर्दारे देवी संस्तुता मोहतो दुराधर्षा वसुरो मधुकैटभो प्रबोधं च जगत्स्वामी नीतामच्युतो लघु बोधश्च क्रियतामस्य हन्तु मे तु महासुरो ऋषिर्वाच एवं संस्तुता तदा देवी तामसी तत्र वेधसा विष्णु प्रबोधनार्थाय निहन्तु मधुकैटभो नेत्रस्य नासिका बाहु हृदयभस्तथोरस निर्गम्य दर्शनेतस्थ ब्राह्मणो अव्यक्तजन्मन उतस्तुश्च जगन्नाथस्तस्या मुक्तो जनार्दन एकार्णवे हयिषीयनाथ सदृशे च तौ मधुकैटभो दुरात्मान अतिवीर्यपराक्रमो क्रोधरक्ते क्षणा वक्तुं ब्रह्माण्डं जनितो घमो समुत्थाय ततस्ताभ्यां युधे भगवान् हरि पंचवस्त्रसहस्राणि बाहुप्रहरणो विभो तावप्यति बलोन्मत्तो महामाया विमोहितो उतवन्तो वरो अस्मतो वीरतान्मिति केशवं श्रीभगवानुवाच भवेतामगमे तुष्टो मम वध्यावुभावपि किमनेन वरेणात्र एतावद्धीवितं मम ऋषिर्वाच वञ्चिताभ्यामिति तदावर्सर्वमापोमयं जगत विलोक्य ताभ्यं गदितो भगवान् कमलेक्षण आओ आं जहीन यतोर्विसलिलेन परिप्लुप्ता ऋषिरुवाच तथेत्युक्त्वा भगवता शङ्खचक्रगदाभृता कृत्वा चक्रेण वैच्छिन्ने जघने शीर्षि तयो एवमेषा समुत्पन्ना ब्रह्मणा संस्तुता स्वयं प्रभावमस्या दिव्यास्तु भूय शृणुं वदामि ते ऐं ॐ इति श्रीमार्कण्डेय पुराणे सावर्णिके मनवन्तरे देवी महात्म्ये मधुकैटवधो नाम प्रथमो अध्याय। अतः द्वितीयो अध्याय। ॐ मध्यम चरितस्य विष्णु ऋषि श्री महालक्ष्मीर्देवता स्निग्छन्द शाकम्भरी शक्ति दुर्गा बीजं वायुस्तत्त्वं यजुर्वेद स्वरूपं श्री महालक्ष्मी प्रीत्यर्थ मध्यम चरित जपे विनियोग ध्यानम् ओम अच्छस्तकपर्सुं गदेशुकुलिशं पद्मं धनुष्कुण्डिकां दण्डं शक्तिमसिं च चर्म जलजं घण्टां सुराभाजनं शूलं पाशसुदर्शने च ददतिं हस्ते प्रसन्नाननं सेवे शैरिभमर्दिनीं महालक्ष्मीं सरोजिस्ताम् ओम ह्रीं ऋषिर्वाच देवासुरमभूवुग्धं पूर्णमब्धशतं पुरा महिषे असुराणामाधिपे देवानां च पुरन्दरे तत्रासुरैर्महावीर्यैर्दैवसैन्यं पराजितं जित्वा च सकलान् देवान् अभून्महिषासुरा तथा पराजिता देवा पद्मयोनिं प्रजापतिं पुरस्कृत्य गतास्तत्र यत्रेष गरुडध्वज तथावृतं तयोस्तद्वन्महिषासुरचेष्टितं त्रिदशा कथयामासुरदेवाभिभवस्विस्तरं सूर्येन्द्राग्न्यलिलेन्दूनां यमस्य वरुणस्य च अनेषां चाधिकारांस स्वमेवाधितिष्ठति स्वर्गा निराकृता सर्वे तेन देवगणा भुवि विचरन्ति यथा मत्र्या महिषेन दुरात्मना एतद्वा कथितं सर्वममरारिविचेष्टितं शरणं वा प्रपन्नास्मो वधस्तस्य विचिन्तयताम् इत्थं निशम्य देवानां वचांसि मधुसूदन चकारकोपं शुम्भश्च विकटीकुटिलाननो ततोऽतिकोपपूर्णस्य चक्रिणो वदनात् निष्कामो महत्तेजो ब्रह्मणः शङ्करस्य च
अनेषां च देवानां शक्रादीनां शरीरतः निर्गतः समूहतेजस्तश्चक्यं समगच्छत। अतीव तेजसा कूटं ज्वलन्तमिमं पर्वतं ददृशुस्ते सुरास्तत्र ज्वालाव्याप्तदिगन्तरम् अतुलं तत्र तत्तेज सर्वदेवशरीरजम् एकस्तत्तद्भुन्नारी व्याप्तलोकत्रयं तिर्षा यद्भुक्षामभवं तेजस्तेनाजायत तन्मुखं चयामेन चाभुवन् केशा बाहो विष्णुतेजसा सौम्येन स्तनयोर्युग्मं मध्यं चन्द्रेण भाचाभूवत् वारुणेन च चङ्गोरु नितम्बस्तेजसा भुव ब्रह्मणस्तेजसा पादौ तदङ्गुलोर्कतेजसा वसूनां च कराङ्गुल्या कौबेरेण च नासिका तयस्यास्तु दन्ता सम्भूता प्रजापतेन तेजसा नयनतृतीयं जघ्ये तथा पावक तेजसा भ्रो च सन्ध्ययोस्तेज स्वर्णावनीलस्यश्च अन्येषां चैव देवानां सम्भवस्तेजसां शिवा ततः समस्तदेवानां तेजोराशिसमुद्भवां तां विलोक्य मुदं प्रापुर्मरा महिषार्दिता शूलं शूलाद्विनिष्कृत्य ददौ तस्यै पिनाकधृका चक्रं च दत्तवान् कृष्णः समुत्पागः स्वचक्रतः शङ्खं च वरुणशक्तिं ददौ तस्यै हुतासना मारुतो दत्तवांश्चापं बाणपूर्णे तथेषुधि व्रजमिन्दसमुत्पाग कुलिशादमराधिप ददौ तस्यै सहस्रास्त्रो घण्टामेवारावताद्गजात् कालदण्डाघमोदण्डं पाशं चामुपतिर्ददौ प्रजापतिश्च श्यामालं ददौ ब्रह्माकमण्डलं समस्तरोमकूपेषु निरश्मिना दिवाकर कालश्च दत्तवान् खड्गं तस्याश्चर्म च निर्मलं क्षीरोदश्चामलं हारमजरे च तथाम्बरे चूडामणिं तथा दिव्यं कुण्डले कटकानि च अर्धचन्द्रं तथा शुभ्रं केयूरान् सर्वबाहुषु नुपुरो विमलो तद्वद ग्रेवेकेनमनुत्मम अङ्गुलीयकररत्नानि समस्त्वासु अङ्गुलीषु च विश्वकर्मा ददौ तस्यै परशुं चार्तिनिर्मलम् अस्त्रानेकरूपाणि तथा भेगं च दंशनम् अम्लान् पङ्कजां मालां शिरसि चापराम् अधजलधिस्तस्य पङ्कजं चातिशोभनं हिमवानवाहनं सिंहं रत्नानि विविधानि च ददावशून्यं सूर्यापानपात्रं धनाधिप शेषश्च सरनागेशो महामणिविभूषिता नागहारं ददौ तस्य धत्ते पृथ्वीमिमाम् अनैरपि सुरैर्देवी भूषणैरायुधस्तथा सम्मानिता ननादो च साटटाः सम्मुहुर्मुहुः तस्यानादेन घोरेण कृतसन्मापूरितं नभ आमायतातिमहता प्रतिशब्दो महान्भुत चुचुवो सकलालोका समुद्राश्च च कम्पिरे चचाल वसुधा चेलु सकलाश्च महीधरा जयति देवाश्च मुदा तामुचु सिंहवाहिनीं तुष्टुर्मनश्चैनां भक्तिर्मात्रममूर्तय दृष्ट्वा समस्तं यशंक्षुब्धं त्रैलोक्यमारार्य सन्नदाखिलसैन्यास्ते समुतस्थुरुधायुधा आं किमेतदिति क्रोधादाभास्य महिषासुर अभ्यधावतं तं शब्दमशेषैरसुरैर्वृता सदर्श ततो देवीं व्याप्तलोकत्रयां तृषां पादाक्रान्त्यानतभुवं कीटोलिलिखिताम्बरां क्षोभिताशेषपातालं धनुर्जानि शनेन तां दिशो भुजसहस्रेण समन्तादव्याप्य संस्थितां ततः प्रवृत्य युद्धं तया देव्यासुरद्विषा शस्त्रास्त्रैर्बहुधा मुक्ते रादीप्तिदिगन्तरं महिषासुरसेनानीश्चु राख्यो महासुर युधे चामरश्चान्यश्च तुरङ्गबालान्युत यथा नाम युते खड्भिरुदा राख्यो महासुर युध्यतायुतानां च सहस्रेण महाहनु पञ्चाशदिभश्च न्यूत्वरे शिलोमार महासुर अयुतानां सक्ते सखड्भिर्भार्शकुलयो युधे रणे गजवाची सहस्रो घैरनेके परिवारित
वित्तोरथानां कोटराया च युद्धे तस्मन्युध्यत वीडालाख्यो अयुतानां च 50 युधे संयुगे तत्र रथानां परिवारित अन्ये च तथायुतसो रथनागैर्विता युध संयुगे देव्या सह तत्र महासुरा कोटिकोटिसहस्रेस्तु रथानां दन्तिनां तथा हैनां च वृतो युद्धे तत्रान्भून्महिषासुरा तोमैरभिन्दिपालैश्च शक्तिर्भिमुसलैस्तथा युधो संयुगे दिव्या खड्गैस्पर्शुपर्टिसे केचि च चिक्षुपु शक्ति केचित् पांसास्थाप्रे देवीं खड्गप्रहारैस्तु ते तां हन्तुर्प्रचक्रमु सापि देवी ततस्थानि शस्त्राण्यस्त्राणि चण्डिका लीलैव च प्रचिच्छेद निजशस्त्रार्षवर्षिणि अनायस्तानना देवी स्तूयमाना सुरर्षिभिः मुमुचो च सुरदेहेषु शस्त्राण्यस्त्राणि चेश्वरी सोऽपि क्रुधोद्धुतशूरो देव्या वाहनकेसरी चचासुरासुरसैन्येषु वेणीष्वाहुतासना निःश्वासनमुचेयाश्च युध्यमानारण्यम्बिका त एव सगासम्भूता गणा शतसहस्रशा युधस्ते परशुभिर्भिन्दिपालैषि पट्टिसे नाशयन्तो असुरागाना देवी शक्त्युपबृहन्ता अवादयन्त पटहाना गणा शङ्खास्थापरे मृदङ्गाश्च तथैवान्ये तस्मिन् युद्धमहोत्सवे ततो देवी त्रिशूलेन गदया शक्तिभिष्टिभिः खड्गादिभिश्च शतश्च निजघान महासुरान् पातयामास चैवान्यान् घण्टास्वनिविमोहितान् असुरान् भुवि पाशेन बदद्वा चान्यकर्ष्यत केचिद्विधा कृतास्तिच्छन् खड्गपातैस्तथापरे विपोथिता विमातेन गदया भुवि सेरते वेमुश्च केचिद्धीरं मुसलेन संहता केचिनिपतिता भूमौ भिन्नाशूलेन वक्षसि निरन्तरास्यरोघेन कृताचे केचिदृणाजिरे सेनानुकारिणा प्राणान् मुमुचुस्त्रिशतसाधना केषाञ्चिदवावव शिच्छन्नग्रीवास्थापरे शिरांसि पेतुरन्यशिरा मन्ये मध्ये विदारिता विच्छिन्नजङ्घास्तोपरे पेतुरव्या महासुरा एकबाहे छिछराना केचिद्दिव्यादिधा कृता छिन्ने अपि चान्ये शिरसि पतिता पुनरुत्थिता कबन्धा युधु देव्यागीर्ति परमायुधा निर्णितिश्चापरे तत्र युद्धे तुर्यलायाश्रिता कबन्धा शिच्छन्न शीर्षा खड्ग शक्तिष्टिपाणया तिष्ठेति भासन्तो देवी मन्ये महासुरा पातिते रथनागाश्च स्वरसुरश्च वसुन्धरा अगम्य साभवत्तत्र यत्राभूत् स महारण सोनितौघा महानग सगस्तत्र पशुश्रु मध्ये चासुरसैन्यस्य वारणासुरवाजिनां क्षणेन तन्महासैन्य महासुराणां तथाम्बिका निन्ने क्षयं यथा वह्नि स्त्रीं दारु महाक्षयं स च सिंहो महानाद मृत्युसृजन्धूतकेसर शरीरेभ्यो अमराणि नमाना मसूनीव विशिन्यवन्ति देव्या गणैश्च तैस्तत्र कृतं युद्धं महासुरे यथेषां तुस्तुष्टुर्देव्या पुष्पिष्टुमुचो दिवि ओम इति मार्कंडे पुराणे सावर्णिके मनवंतरे देवी महात्म्ये महासुरी सैन्यवधो नाम द्वितीय अध्याय। अतः तृतीय अध्यायः। ओम उग्भानुसहस्रकान्ति मरुणोक्षमां शिरोमालिकां रतालिप्तपयोधरां जपवटीं विद्यामभितिं वरं हस्तावजैर्दधतीं त्रिनेत्रविलसद्वक्त्राविन्दश्रियं देवीं बद्धहिमांशुरत्नमुकुटां वन्दे अविन्दस्थिताम्। ओम ऋषिरुवाच निहन्यमानं तत्सैन्यमवलोक्य महासुरा सेनाशीचुरकोपबाघयो योदधूम्बथाम्बिकां स देवीं सर्वर्षेण ववर्ष समरीयसुर यथा मेरुगिरे शृङ्गं तोयवर्षेण तोयद तस्य छित्त्वा ततो देवी
नीलैव सरोत्करा जघान्तुर्गान बाणर्यन्तारं चैवाजिना चिछेद च धनुसर्गो ध्वजं चाति समुचितं बिभ्याध चैव गात्रेषु छिन्नधन्वान्मासुगे सछिन्नधन्वाविर्थो हताश्वरो हतसारथि अभ्यधावत तां देवीं खड्गचर्मधरो असुरा सिंहमात्य खड्गेन तीक्ष्णमाधारेण मूर्धनि आजघान भुजे सभ्ये देवीमप्यतिवेगवान् तस्या खड्गो भुजं प्राप्य फफालनिपनन्दन ततो जग्राशूलं स कोपादरुणलोचन चिक्षेप च तस्तस्तु हृत्काल्यां महासुरा जाज्वल्यमानं तेजोभिः रविबिम्बमिवाम्बरात् दृष्ट्वा तदापतच्छूलं देवी शूलमन्मुच्यत तच्छूलं सतदाद्रेण नीतं स च महासुर हते तस्मिन् महावीर्ये महिषस्य च मूपतो आजगाम गजारूढ सचामरस्त्रिदशार्दन सोऽपि शक्तिं सुमुमोचाथ देव्यास्ताम्बिकादृतं हुङ्काराभिहतां भूमौ पात्यामास निष्प्रभा भग्नां शक्तिं निपतितां दृष्ट्वा क्रोधसमन्विता चिक्षेप चामरशूलं बाणस्तदपि साक्षिणत तदा सिंहः समुत्पत्य गजकुभान्तरे स्थितः बाहुयुद्धेन युधे तेनोच्चस्त्रिदशारिणा युध्यमानो ततस्तस्तौ तु सस्मानगान्महिं गतो युधात्ते अतिशरब्धो प्रहारेरतिदारुणे ततो वेगात् खमुत्पत्य निपत्य च मृगारिणा करप्रहारेण शिरश्चार्मारस्य पृथक् कृतम् उद्गश्चरणे दिव्या शिलावृक्षादिभिर्हत दन्तुमुष्टितलैश्चैव करालश्च निपातित देवी क्रुधा गदापाते शृणुयामासु चोदितं वास्कलं बिन्दिपालेन बाणैस्ताम्रं तथान्धिकम् उग्रास्यमुग्रवीर्यं च तथैव च महाहनु त्रिनेत्रा च त्रिशूलेन जघान परमेश्वरी बिडालस्याशिशीनाकायात् पातयामास वै शिरा दुर्धरं दुर्मुखं चोभौ शैर्निर्णयमक्षयम् एवं सञ्चिमाने तु स्वसैन्ये महिषासुर माहिषेण स्वरूपेण त्रास्यामास तान् गणान् कांची च तुण्डप्रहारेण खुर्क्षेपैस्तथापरां लाङ्गुतारितां सचान्याश्चिङ्गाभ्यां च विदारितान् वेगेन कांचिदपानादेन भ्रमणेन च निःश्वासपरिणामेन पातयामास भूतले निपात्य प्रमथानिकमभ्यधावत सोऽसुर सिंहं हन्तुं महादेव्या कोपं चक्रे तथाऽम्बिका सोऽपि कोपान् महावीर्यं खुरच्छुन्नमहीतल सिंहाभ्यां परतानुश्च शिक्षेप च ननाद च वेगभ्रमणा विच्छुन्नना मही तस्य विहर्षिरत् लाङ्गूलेन हात सचाब्धि प्लवाल्यामास सर्वतः धूतशृङ्गविभिन्नाश्च खण्डं खण्डं यूर्ध्वघना श्वासनिनास्तया सतसो निपेतुर्नभसो अचला इति क्रोधसमाध्यामात् मापतन्तं महासुरं दृष्ट्वा सा चण्डिका कोपं तद्वाधाय तदाकरोत् सा क्षिप्त्वा यस्तस्य वैपासं तं बबन्धं महासुरं तत्याज महाईशं रूपं सोऽपि बधो महामृधे तथा सिंहो अभवत् सत्सगो यावत्स्याम्बिकाशिरा छिनति तावत् पुरुषः खड्गपनिरदृश्यते तथा एवासु पुरुषं देवी चिच्छेदसायके तं खड्गचर्मणा सार्धं ततः सोऽभून्महागजा करेण च महासिंहं तं चर्कसजर्गज च करस्तस्तु करं देवी खड्गेन निरस्कृतन्त ततो महासुरो भूयो माहिषं स्थितः तथैव चोभयामास त्रैलोक्यं सचराचरं तथा क्रुधा जगन्माता चण्डिकापानमुक्तमं पपो पुनः पुनश्चैव जहासारुणलोचना नर्द चासुरः सोऽपि
बलवीर्मयोदोधत विसानाभ्यां च चिक्षेप चण्डिकां प्रतिबुधरा सा च तान् पहिस्तास्तेन चूर्णयन्ती सरोत्करे उवाचं तं मदोध धूतमुखरागाकुलाक्षरं देवी उवाच गर्ज गर्ज छनं मूढं मधुव्यावत् पिबाम्यहं मया त्वयि हति यत्र गर्जिष्यन्त्यासु देवता। ऋषिर्वाच एवमुक्ता समुत्पत्य सारूढा तं महासुरं पादेनाक्रम्य कण्ठे च शूलेनमताड्यत ततसोऽपि पदाक्रान्तस्तस्य निजमुखात् ततः अर्धनिष्क्रान्त एवासीद दिव्या वीरेण संवृत अर्धनिष्क्रान्त एवासो युध्यमानो महासुर तया महासिना देव्या शिरश्चित्वा निपातित ततो हा कृतं सर्वं दैत्यसैन्यं ननास्ततः प्रहर्षं च परं जग्मु सकला देवतागणा तुष्टुष्टुस्तां सुरादेवी सह दिव्यैर्महर्षिभिः जुगुर्गन्धर्वपतयो नर्तिश्च च परसुरोगणा। ओम इति श्रीमार्कण्डेय पुराणं सावर्णिके मन्वन्तरे देवी महात्म्ये महिषासुरवधो नाम तृतीयोऽध्यायः। ओम चतुर्थोऽध्यायः। ध्यानम् ओम कालाभ्रां कटाक्षैरिकुलभयदां मौलिबन्धेन्दुरेखां शङ्खं चक्रं कृपाणं त्रिशिखीमपि करेरुध्वन्ति त्रिनेत्रां श्रियस्कन्धाधिरूढां त्रिभुवनमखिलं तेजसा पूरयन्तीं ध्यायेद दुर्गां ज्यायाख्यां तिरस्परिवृतां सेवितां सिद्धिकामे। ओम ऋषिर्वाच शक्रादय सुरगणा निहति अतिवीर्ये तस्मिन् मधुरात्मने सुरारिबले च देव्या तां तुष्टुप्रणति नम्रशिरोधरांसां वाग्भिप्रहर्षपुलकोदगमाचारुदेहा देव्या यया ततमिदं जगदात्मशक्त्या निशेषदेवगणशक्तिसमूहमूर्तया ताम्बिकामखिल देवमहर्षि पूज्यां भक्त्या नता स्म विदधातु शुभानि सा न यस्या प्रभावमतुलं भगवानन्तो ब्रह्माहरश्च न हि वक्तुमलं बलं च सा चण्डिकाखिल जगत्परिपालनाय नाशाय चासु सभयसमतिं करोतु या श्री स्वयं सुकृतीनां भुवनेश्वरलक्ष्मीं पापात्मनां कृतधियां हृदयेषु बुद्धिं श्रद्धा सतां कुलजनप्रभवस्य लज्जा तां त्वां नता स्म परिपालय देवी विश्वं किं वर्णयाम तव रूपमर्चितन्यतमेतत किं चाति वीरमसुरक्षयकारी भूरि किं चाहवे शिवचरितानि तवाद्भुतानि सर्वेषु देवसुरदेवगणादिकेषु हेतु समस्तजगतां त्रिगुणापि दोषे वर्णाज्ञासे हरिहरादिभ्यः परिपारा सर्वांस्याखिलमिदं जगदंस्मृतं मव्याकृता हि परमा प्रकृतिस्त्वसमाघा यस्या समस्तसुरता सुमुदीर्णेन तृप्तिं प्रयाति सकलेषु मखेसि देवी सुदेवी स्वाहा शिवै प्रीतिगणस्य च तृप्तिहेतुरुच्चार्यसे मत एव जनय स्वधा च या मुक्तिहेतुरविचिन्त्य महाव्रता त्वमभ्यस्य से सुनीयते इन्द्रियतत्त्वसारे मोक्षार्थिभिर्मुनिभिरस्तसमस्तदोषे विद्यासी सा भगवती त्वमाहि देवी शब्दात्मिका विमलर्घ्यजुषां निधान मुदगितरम्यपदपाठवतां च साम्ना देवी त्रयी भगवती भवभावनाय वार्तां च सर्वजगतां परिमार्तिहन्त्री मेधासी देवी विधिता अखिलशास्त्रसारा दुर्गासी दुर्गभवसागर नौरसंगां श्रीकैटभारी हृदयकृताधिवासा गौरी त्वमेव स्यसि मौलिकृतप्रतिष्ठा ईषत् सहामसमलं परिपूर्णचन्द्रबिम्बनानुकारी कनकोत्तमकान्तिकान्तम् अत्यद्भुतं प्रहृतमातुरुषा तथापि वक्त्रं विलोके सहसा महिषासुरेण दृष्ट्वा तु देवी कुपितं प्रकुटीकराल मुगच्छशाङ्कसदृशछवि यन्न सग प्राणोन्मोक्ष महिषस्तदित्वा चित्रं कीर्जीव्यते हि कुपितान्तकर्दर्शनेन देवी प्रसिद्ध परमा भवती भवाय सगो विनाशयसि कोपवती कुलानि
विज्ञातमेतदधुनैव यदस्तमेतत् निहितं बलं सुविपुलं महिषासुरस्य ते समस्ता जनपदेषु धनानि तेषां यशांसि न च सीदति धर्मवर्ग धन्यास्त एव निभृताम्यज प्रत्यदारा येषां सदाभ्युदयदा भवति प्रसन्ना धर्मयानि देवी सकलानि सदैव कर्म नियत्यादृता प्रतिदिनं सुकृति करोति स्वर्गं प्रयाति च ततो भवति प्रसादा लोकेत्रयेऽपि फलदा ननु देवी तेन दुर्गे स्मृता हर्षि भीतम शेष जंतो स्वस्ति स्मृता मतीमतीव सुधां ददासि दारिद्र्य दुख भयहारिणी का त्वदन्या सर्वोपकार करारण्या सदार्दर्चिता एभि हते जगदुपैति सुखं तथैते कुर्वन्तु नाम नरकाय चिराय पापं संग्राम मृत्युमधिगम्य दिव्यं प्रियान्तु मत्वेति नूनमहितान् विनिहंसि देवी दृष्टैव की न भवति प्रकरोति भस्म सर्वासुरा नरीषु यत् प्रहिणोषि शस्त्रं लोकान् प्रयान्तु रिपोऽपि हि शस्त्रपूता इतरं मतिर्भवति देष्ववित्तेयति साध्वी खड्गप्रभानिकर विस्फुरणस्तथोग्रे शूलाग्रकान्तिविनिवहेन दिशोऽसुराणां यन्नागता विलम ये मनसुमन्दिन्दुखण्डयोगियानाननं तव विलोकयतां तदेतत् दुरितवृत्तशमनं तव देवी शीलं रूपं तथैत विचिन्त्य तुल्यमन्ये वीर्यं च हन्तुं हृतदेव पराक्रमानं वैरिष्वपि प्रकृतितैव दया तत्त्वतैथं केनोपमा भवतु ते यस्य पराक्रमस्य रूपं च शत्रुभयहारि कुत्र चित्ते निपासमुन्निष्ठुरा च दृष्ट्वा त्वयैव देवी वरदे भुवनत्रयेऽपि त्रैलोक्यमेतदखिलं रिपुनाशनेन त्रातं त्वयां समूलमूर्धने तेऽपि हत्वा नीता दिव्यं रिपुगणनामभयमप्यपास्त मस्माकमुन्मदसारारिर्भवं नमस्ते शूलेन पाहि नो देवी पाहि खड्गेन चाम्बिके घण्टास्वनेन न पाहि चाप्यानि स्वनेन च प्राच्यं रक्ष प्रतीच्यां च चण्डिके रक्ष दक्षिणे ब्राह्मणेन मात्मशूलस्य उत्तरस्यां तथेश्वरि सौम्यानि यानि च रूपाणि त्रैलोके विचरन्ति ते यानि चार्थघोराणि तैस्तरक्षरास्मास्तथा भुवं खड्गशूलगदादीनि यानि च स्तानीति अम्बिके करपल्लवसङ्गिनी तैरस्मान् रक्ष सर्विता ऋषिरुवाच एवं स्तुता सुरैर्दिव्ये कुसुमशयननोद्भवे अर्चिता जगतां धात्री तथा गन्धानुलेपने भक्त्या समस्तैस्त्रीदर्शैर्दिव्यैर्धूपैस्तु भूपिता प्राह प्रसाद सुमुखी समस्तान् प्रणतान् सुरान् देवी उवाच वेतां त्रिदशा सर्वे यदस्मतोऽभिवाञ्छितं देवाऊचु भगवत्या कृतं सर्वं न किञ्चिदवशिष्यते यदेयं निहतः शत्रुरस्माकं महिषासुर यदि चापि विवरोधेयस्तवस्माकं महेश्वरी संस्मिता स्त्वं नो हि शेता परमापदा यश्च मतयस्तवैरभिषस्त्वाम् अस्तोस्यमालानने तस्या वितर्दिविभैर्धर्ना दारादिसम्पदां विधेयत्सत्प्रसन्ना त्वं भवेथा सर्वदाम्बिके ऋषिरुवाच इति प्रसादिता देवै जगतोऽर्थे तथात्मनं तथेत्युक्त्वा भद्रकाली युवान्त्रिता निप इत्येतत्कथितं भूपसम्भूता सा यथा पुरा देवी देवशरीरेभ्यो जगत्यर्थितैसिनी पुनश्च गौरी देहात् सा समुद्भूता यथाभवत् वधायदिष्टदैत्यानां तथा शुम्भनिशुम्भयो रक्षणाय च लोकानां देवानुपकारिणी तच्छिनि स्वमया ख्यातं यथा कथयामि ते ह्रीं ॐ इति मार्कण्डे पुराणे सावर्णिके मन्वन्ते देवी महात्म्ये शक्रादिस्तुतीनां चतुर्थोऽध्यायः इति पंचमोऽध्यायः विनियोगः ओम अस्य श्री उत्तरचरितस्य रुद्रऋषि महासरस्वती देवता अनुष्टुप छंद भीमाशक्ति भ्रामरी बीजम सूर्यस्तत्वं सामवेद स्वरूपं महासरस्वती प्रीत्यर्थे उत्तरचरित पाठे विनियोग ध्यानम् ओम घंटाशूलहलानि शंखमूसले चक्रं धनुं सायकं हस्ताभजदतीं घनानन्तविलसचितां सुतुल्यप्रभां गौरीदेहसमुद्भवां त्रिजगतामाधारभूतां महापूर्वामत सरस्वती मनुभजे शुंभादिदैत्यादीनां ओं क्लीं ऋषिर्वाच
पुरा शुम्भनिशुम्भ्यामसुराभ्यां सचीपते त्रैलोक्यं यज्ञभागश्च हर्ता मद्बलाश्रयात् तावेव श्रूयतां तद्वदधिकारं तथैन्दव कौबेरमथ चाम्याम्यं च चक्राते वरुणस्य च तावेव पवर्णरधि च चक्रतुर्वणिकर्म च ततो देवा विनिर्धूता भ्रष्टराज्या पराजिता हिताधिकारस्त्रिदास्ताभ्यां सर्वे निराकृता महासुराभ्यां तां देवीं संस्मर्णते पराजिता तयास्माकं वरो दत्तो यथापत्सु अस्मिताखिला भवतां नाशिष्यामि तत्क्षणात् परमापदा इति कृत्वा मतिं देवा हिमवन्तं नगेश्वरं जगमुस्तत्र ततो देवीं विष्णुमायां प्रतुष्टुत्वा देवा वायुचु नमो देव्ये महादेव्ये शिवाय सततं नमः नमः प्रकृति भद्राय नीताप्रन्ता स्मृता रौद्राय नमो नित्या गौरी धात्री नमो नमः ज्योत्स्नाय चेन्द्ररूपिणे सुखाय सततं नमः कल्याणे प्रणतां विद्ये सिद्धे कुर्मो नमो नमः नैकृते भूभृतां लक्ष्म्यै सर्वानयते नमो नमः दुर्गाय दुर्गपाराय साराय सर्वकारिणे ख्यातये तथे कृष्णाय धूर्माय सततं नमः अतिसौम्यातिरौद्राय नमोस्तस्यै नमो नमः नमो जगत्प्रतिष्ठाय दिव्ये कीर्ते नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति शब्दिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु चैतन्येत्यभिधीयते नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु निद्रारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु क्षुधारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु छायारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु तृष्णारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु जातिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु लज्जारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु सदारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु कान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु वृत्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु स्मृतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु तुष्टिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु
मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु भ्रान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इन्द्राणामधिष्ठात्री भूतानां चाखिलेषु या भूतेषु सततं तस्यै व्याप्तिदेव्यै नमो नमः। चितिरूपेण या कृता सन् मेतदा व्याप्या स्थिता जगत् नमस्तस्यै 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 नमो नमः। स्तुतासुरे पूर्वमभीष्टसंश्रया तथा सुरेन्द्रदेनेषु सेविता करोतु सा न शुभेतुरीश्वरी शुभानि भद्रा विहन्तु चापदा या साम्प्रदं चौदत्यापीते रश्माभिरीसा च सुरैर्नमस्यते या च स्मिता तच्छन्मेव हन्ति न सर्वापदो भक्तिविनम्रमूर्तिभिः। ऋषिरुवाच एवं स्तवादियुक्तानां देवानां तत्र पार्वती स्नातुमभ्याययतो ये जाह्नव्या नृपनन्दन। सावृतान् सुरान् सुरभुर्भर्वदिभिः स्तूयते अत्र का शरीरकोशतश्चास्य समुद्भूताभिर्विश्वा स्तोत्रमैतत् क्रियते शुम्भदैत्यनिराकृते दैवसमेते समरे निशुम्भेन पराजिते। शरीरकोशाघातस्या पार्वत्या निःसिताम्बिका कौशिकीति समस्तेषु ततो लोकेषु गीयते। तस्यां विगतायां तु कृष्णाभूतसापि पार्वती कालिकेति समाख्याता हिमाचलकृताश्रया। ततो अम्बिकां परं रूपं बिभ्राणां सुमनोहरं ददर्श चण्डो मुण्डश्च भृत्यो शुम्भनिशुम्भयो। ताभ्यां शुम्भाया चाख्याता अतीव सुमनोहरा काप्यास्ते स्त्रीमहाराजा भासयन्ति हिमाचलं। नैव तादृकं क्वचिद्रूपं दृष्ट्वं केनचिदुत्तमं यायतां काप्यसो देवी गुहितां चासुरेश्वर। स्त्रीरत्नमतिर्चार्वङ्गी मोदयन्ती दिशस्त्वसा सा तु तिष्ठति दैत्येन्द्र तां भवान् द्रष्टुमर्हति। यानि रत्नानि मणयो गजास्वादिनी वै प्रभो त्रैलोक्ये तु समस्तानि साम्प्रतं भान्ति ते गृहे। ऐरावत समानितो गजरत्नं पुरन्दरात् पारिजाततरुच्छायां तथैवोच्च श्रवाहय। विमानं हंसिव संयुक्त मे तिष्ठति से अङ्गुने रत्नभूतमिहानितं सदा यदा स्वीदृधसोऽद्भुतं निधीरे स महापद्म समानितो धनेश्वरात्। किञ्जलिकनिं ददौ चाभिर्धमालामलानपङ्कजा छत्रं ते वारुणं गेहे काञ्चनश्रावी तिष्ठति तथायाम् असैन्दन्वरो यः पुरासीत् प्रजापते। मृत्योरुत्क्रान्तिदरा नाम शक्तिरिषि त्वया हता पाशसलिलराजस्य भ्रातुस्तव परिगृह्य निशुम्भस्य भीतजातश्च समस्ता रत्नजातयः वह्निरपि ददौ तुभ्यमग्निशोच च वाससि। एवं दैत्रेण रत्नानि समस्तान्याहृतानि ते स्त्रीरत्नमीशा कल्याणी त्वया कस्यां मान्यं गूह्यते। ऋषिरुवाच विस्मयेति वचः शुम्भ स तदा चण्डमुण्डयो प्रेषयामास सुग्रीवं दूतं देव्यां महासुराम्। इति चेति च वक्तव्या स गत्वा वचोऽन् मम यथा चाभ्यति सम्प्रीत्या तथा कार्य त्वया लघु। स तत्र गत्वा यथास्त्रे शैलोदृशे अतिशोभने सा देवी तां ततः प्राह सलक्षणं मधुरया गिरा। दूतुवाच देवी दैत्येश्वर शुम्भ स्त्रीलोके परमेश्वर दूतोऽहं प्रसीतस्तेन तत्काशमिहागत अव्याताज्ञ सर्वासु यशदा देवयोनिषु निर्जिताखिलदैत्यारी स यदा शृणुष्व तत् मम त्रैलोक्यमखिलं मम देवावसानुगा यज्ञभागानहं सर्वानुपाश्रणामि पृथक् पृथक्। त्रैलोक्ये वररत्नानि मम वश्यानशेषतः तथैव गजरत्नं च हित्वा देवेन्द्रवाहनं क्षीरोदमथोनोद्भूतमश्वरत्नं ममामर उच्चे स्वयंगं तत्प्रणिपत्य समर्पितं। यानि चान्यानि देवेषु गन्धर्वेषु रगेषु च रत्नभूतानि भूतानि तानि मय्यै शोभने। स्त्रीरत्नभूतां त्वां देवी लोके मन्यामहे वयं
सा त्वमस्मन्मानुपागच्छ ततो रत्नभुजो वयं मां वाममानुजं वापि निशुम्भमुरु विक्रमं भजत्वं चञ्चलापाङ्गी रत्नभूतासि वै यत् परमेश्वरमतुलं प्राप्स्यसि मत्परिग्रहात् एतदवृद्धया समालोच्य मत्परिग्रतां व्रज। ऋषिरुवाच इति उक्ता सा तदा देवी गम्भीरान्तस्मिता जगो दुर्गा भगवती भद्रायै इदं निर्धारयति जगत्। देवी उवाच सत्यमुतं त्वयान्मानात्र मिथ्या किञ्चित् वयोदितं त्रैलोक्य अधिपति शुम्भो निशुम्भश्चापि दादृश कि त्वत्र यत् प्रतिज्ञातं मिथ्या तत् प्रक्रियते कथं श्रुत्यामल्पबुद्धित्वात् प्रतिज्ञाया कृता पुरमुरा यो मां जयति संग्रामे यो मे दर्पं व्योपति यो मे प्रतिबलो लोके स मे भर्ता भविष्यति तथा गच्छतु शुम्भो अत्र निशुम्भो वा महासुर मां जित्वा कृषिर्नेत्रा पाणिं गृह्णात् मे लघु। उवाच अवलिप्तासि मैवं त्वं देवी ब्रूहि ममागत त्रैलोक्यं कं पुमास्ति छेदेग्रे निशुम्भयो अनेषामपि दैत्यानां सर्वे देवा न वै युधि तिष्ठन्ति सम्मुखे देवी किं पुनः स्त्री त्वमेकिका इन्द्राघा सकला देवास्तु वैरसां न संयुगे शुम्भादीनां कथं तेषां स्त्री प्रयास्यासि सम्मुखं सा त्वं गच्छ मयोक्ता पार्श्वं शुम्भनिशुम्भयो केशाकर्षनिधूर्तगौरवा मागमिष्यसि। देवी उवाच एवमेतदा बलि शुम्भो निशुम्भश्चातिवीर्यवान् किं करोमि प्रतिज्ञा मे यदा न लोचिता पुरा स त्वं गच्छ मयोक्तं ते यदेत सर्वमादृत एतदा च श्वासुरेन्द्राय स च युक्तं करोतु तत्। ओम श्री मार्कंडे पुराणे सावर्णिके मनवंतरे देवी महात्म्ये देव्या दूत संवादो नाम पंचमो अध्याय। षष्ठो अध्याय धूम्रलोचन वध। ओम नागाधीश्वर विष्टप्रां फणिफणोक्तं सोरुरत्नावली भास्वदेलतां दिवाकर्णिभां नेत्रत्योदभासितां मालाकुम्भकपालनीरजकरां चन्दार्धचूडां परां सर्वज्ञेश्वर भैरवाङ्क नीलयां पद्मावतीं चिन्तये। ओम ऋषिरुवाच इत्याकर्णवचो देव्या स दूतोऽमरसपूरित समाचष्ट समागम्य दैत्यराजाय विस्तारत तस्य दूतस्य तद्वाक्य मार्कण्ड्यासुराट ततः सक्रोध प्राह दैत्यानामधिपं धूम्रलोचन हे धूम्रलोचनासु त्वं स्वसैन्यपरिवारित तामानाय बलाद दुष्टां केशाकर्षणविहल्वां तत्परित्राणद कश्चिदधित्वे तिष्ठते अपर स हन्तु व्यवमरो वापि यच्छो गन्धर्व एव च। ऋषिरुवाच तेनाज्ञप्तस्य शीघ्रं स दैत्यो धूम्रलोचन वितखट्या सहस्राणामसुराणां द्रुतं ययो स दृष्ट्वा तां ततो देवीं तुयिनाचल संस्थिता जगादोच्चै प्राहीति मूलं शुम्भनिशुम्भयो न चेत् प्रत्याज्ञा भवति मद्भारतमुपैस्यति ततो बलान्यामे स केशाकर्षणविहल्वा। देवी उवाच दैत्येश्वरेण प्रेरितो बलवान् बलसंवृत बलान्यसीमावेमं मतत किं करोम्यहम्। ऋषिरुवाच इति उक्तः सोऽभ्यधावतामसुरो धूम्रलोचन हुङ्कारेणैव तं भस्म सा चकाराम्बिका ततः अथ क्रुधं महासैन्यमसुराणां तथाम्बिका ववर्ष सा कैस्तिच्छयनस्तथा शक्तिपरश्वरेदय ततो धूतष्टकमुपात कृत्वा नादं सुभैरवं पपात शूरसेनायां सिंहो देव्या सोवाहन काञ्चितकरप्रहारेण दैत्यानाशेन चापनन आक्रम्य चादरेणान्य स जगान् महासुरान् केनसाचित् पाटयामास नखैकोष्ठानि केसरी तथा तलप्रहारेण शिरांसि कृतवान् पृथक् विच्छिन्न बाहुशीर्ष कृतास्तेन तथा परे पपौच रुधिरं कोष्ठादन्येषां धुतकेसर क्षणेन तद्बलं सर्वं क्षयं नीतं महात्मना तेन केसरिना देव्या वाहेन नातिकोऽपि न श्रुत्वा तं सुरं देव्या नीतं धूम्रलोचनं बलं च क्षयितं कृष्णस्नं देवी केसरिना तथा चुकोपदैत्याधिपति शुम्भप्रसुपूरिताधर आज्ञापयामास च तौ चण्डमुण्डो महासुरो हे चण्ड हे मुण्डबलैर्बहुभिः परिवारितो तत्र गच्छत गत्वा च
सा सामान्यतां लघु केसि स्वास्वीकृत्य बदद्वा वा यदि वा संशयो युधि तदा शेषायुधे सर्वे सूर्यविनियन्तां तस्यां हतायां दुष्टायां सिंहे च विनिपातिते शीघ्रमागम्यतां वदद्वा गृहीत्वा तां थाम्बिका। ओम इति मार्कंडे पुराणे सावर्णिके मनवंतरे देवी महात्म्ये शुंभ निशुंभ सेनानी धूम्रलोचन वधो नाम षष्ठोऽध्यायः। ओम सप्तमो अध्यायः। ओम ध्यायेयं रत्नपीठे सुखकल्पठितं शृण्वतीं श्यामलांगीं न्यस्ते काङ्गण्यं सरोजे शशिसकलधरां वल्लकीं वादयन्तीं कह्लारबद्धमालां नियमितविश्लसचोलिकां रत्नवस्तां मातङ्गीं शङ्खपात्रां मधुरमधुमां चित्रकोदभासिभालम्। ओम ऋषिरुवाच आज्ञप्तास्ते ततो दैत्याश्चण्डमुण्डपुरोगमा चतुरङ्गबलोपेता ययुरभयुधगतायुधा ददृश्यसुस्ते ततो देवी मिश्रद्वासां व्यवस्थितां सिंहस्योपरि शैलेन्द्रेण शृङ्गे महती काञ्चने ते दृष्ट्वा तां समादातुमुखं चक्रुरुघता आकृष्टचापासीधरास्तथान्ये तत्समीपगा ततः कोपं चकोरोचैरम्बिका तानरीनप्रति कोपेन चास्यावदनं मसीवर्णमभूतदा विकुटिकुटिला तस्य ललाटफलकादद्रुतं कालिकरालवदना विनिष्क्रान्ता सिपासिनी विचित्रखड्वाङ्गधरा नरमाला विभूषणा दीपिचर्मपरिधाना शुष्कमांसाति भैरवा अतिविस्तारवदना जिह्वाललनभीषणा निगमग्नारक्तनयना नादापूरितदिङ्मुखा सवेगेनाभिपतिता घातयन्ती महासुरान् सैन्ये तत्र सुरारीणामभक्ष्यत तद्बलं पार्श्वेण ग्राहकुशग्राह्यो घघण्टा समन्वितान् समादायकहस्तेन मुखे चिक्षेपवारणान् तथैव वियोधं दुर्गे रथं सारिथर्थायना सह निक्षिप्य वक्त्रे दशनश्च रण्टयति भैरवम् एकं जग्राह केशेषु ग्रीवायामथ चापरं पादेनाक्रम्य चैवान्यमूर्धान्यमपोथयत् तैर्मृतानि च शस्त्राणि महास्त्राणि तथासुरे मुखेन जग्राह रुषा दशनैर्मथितान्यपि बलिनां तद्बलं सर्वमसुराणां दुरात्मनां ममार्धश्च भक्ष्य च यच्चान्यान्याश्चान्तर्ययत् तथा असिना निहता केचित् खट्वाङ्गारिता जगमुर्विनाशमसुरा दन्ताग्रविहतास्तथा छनेन तद्बलं सर्वमसुराणां निपातितं दृष्ट्वा चण्डमुण्डो अभिदुद्रुवाव तां कालीमतिभीषणां शरैर्वर्षैर्महाभिक्षामि तां महासुरा छादयामास चक्रश्च मुण्डक्षिप्ते सहस्रश तानि चक्राण्यनेकानि विस्मानानि तन्मुखं बभ्रूयथार्कबिम्बानि सुबहूनि घनोदरं ततो जिहासातिरुषा भीमं भैरवार्णादिनी कालीकरालवन्त्रान्तर्दुर्दशदशोज्ज्वला उत्थाय च महासिंहं देवी चण्डमदावता गृहीत्वा चास्य केशेषु शिरस्तेनाशिनाच्छिनात् अथ मुण्डो अभ्यधावतां दृष्ट्वा चण्डं निपातिताम् तमप्यं पातयदुद्भव सा खड्गाभिहतं वृषा हतशैषं ततः सैन्यं दृष्ट्वा चण्डं निपातिता मुण्डं च सुमहावीर्यं दिशो भेजे भयातुरां शिरश्चण्डस्य काली च गृहीत्वा मुण्डमेव च प्राह प्रचण्डाटसममीश्रमभ्यते चण्डिकां मया तवातो परितो चण्डमुण्डो महापशु युद्धयज्ञे स्वयं शुम्भं निशुम्भं च हनिष्यसि ऋषिरुवाच तावानितो ततो दृष्ट्वा चण्डमुण्डो महासुरो उवाच कालीं कल्याणी ललितं चण्डिकावच यश्चाच चण्डं च मुण्डं च गृहीत्वा त्वमुपागता चामुण्डेति ततो लोके ख्याता देवी भविष्यसि। ओम श्री मार्कंडेय पुराण सावर्णिके मनन्वन्तरे देवी महात्म्ये चण्डमुण्डो नाम सप्तमो अध्यायः। ओम दुर्गाय नमः। ओम अष्टमो अध्यायः। ओम अरुणां करुतारंगिताक्षी धृतपाशाङ्कुश बाणचापहस्ताम् अनिमादिभिरावृतां मयूखैरहमित्वेय विभावये भवानीम्। ओम ऋषिर्वाच
चण्डे च निहिते दैत्ये मुण्डे च विनिपातिते बहुलेषु च सैन्येषु क्षयिते स्वसुरेश्वर ततकोपराधीन चेता शुम्भप्रतापवान् उद्योग्यं सर्वसैन्यानां दैत्यानां दिदेशः अज्ञ सर्वबलं लयदैत्या खड्गशीतिरुधायुधा कम्बूनां च्युतरिशीति निर्यान्तु स्वबलैर्वृता कोटिवीर्याणि च पञ्चाशदसुराणां कुलानि वै कृतं कुलानि धर्माणं निर्गच्छन्तु ममाज्ञा कालकादोहृदा मौर्या काल केयातस्थासुरा उद्धाये सज्जा निर्यान्तु आज्ञा त्वरिता मम इत्याज्ञाप्य सुरपतिशुम्भो भैरवशासन निर्जिगाम महासैन्य सहस्रैर्बहुभिर्वृता आयान्तां चण्डिका दृष्ट्वा तत्सैन्यमतिभीषणा जास्वने पूर्वयामास धरणी गगनान्तरं तत्सिंहो महानादमतीव कृतवान् निप घण्टास्वनेन तन्नादमम्बिका चोपबृहयत धनुर्जासिंह घण्टानां नादापूरितदिङ्मुखा निर्नादैर्भीषणे काली जिगे विस्तारितानना तं नादमुपसृत्य दैत्यसैन्ये सचतुर्दिशं देवी सिंहस्तथा काली सरोषे परिवारिता एतस्मिन्नन्तरे भूपविनाशाय सुरद्विषां भवायामर्षिहानामति वीर्यबलानिवात ब्रह्मे स गुरुविष्णूनां तथेन्द्रस्य च शक्तया शरीरेभ्यो विनिष्क्रम्य तद्रूपश्चण्डिकां ययुः यस्य देवस्य यद्रूपं यथा भूषणवाहनां तद्वद्वेद्व हि तच्छरीति रसुरान् योद्धुमाययो हंसयुक्तविमानाग्रे साक्ष्य सूत्रकमण्डलो आयात ब्रह्मणः शक्तिर्ब्रह्माणि सा विधीयते माहेश्वरी विशारूढा त्रिशूलवरधारिणी महाहीवलया प्राप्ता चन्द्ररेखा विभूषणा कौमारी शक्तिहस्ता च मयूरवरवाहना योद्धुमभ्याययो दैत्यानम्बिका गृहरूपिणी तथैव वैष्णवी शक्तिर्गरुडोपरि संस्थिता शङ्खचक्रगदा साङ्गर खड्गहस्ताभ्युपाययो यज्ञवराहमतुलं रूपं या बिभ्रतो हरे शक्तिसाप्याययो तत्र वाराहिं बिभर्ति तनुं नारसिंहीं नृसिंहस्य बिभर्ति सदृशं वपु प्राप्ता तत्र क्षिप्तनक्षत्र सहन्ति वज्रहस्ता तथैवेन्द्री गजाराजोपरि स्थिता प्राप्ता सहस्रनयना यथा शक्रस्तथैव तथा परिवृत स्थाभिरीशानो देवशक्तिभिः हन्यन्तामसुराः शीघ्रं मम प्रीत्या चण्डिका ततो देवी शरीरात् विनिष्क्रान्तातिभीषणा चण्डिका शक्तिरत्रियुगा शिवा सत्निनादिनी सा चाह धूमजटिलमीभिषान् पराजिता दूतत्वं गच्छ भगवन् पार्श्वशुं निशुम्भयो ब्रूहि शुम्भं निशुम्भं च दानवातिवडी गर्वितो ये चाने दानवास्तात्र युद्धाय समुपस्थिता त्रैलोक्यमिन्द्रो लभतां देवा सन्तु हरिर्भुजा यूयं प्रायत पातालं यदि जीवयितुमिच्छत बलावल्ले पादथ चैद्भवन्तो युद्धकाङ्क्षिणा तदा गच्छत तृप्यन्तु मच्छिवा पीशितेन वा यतो नियुक्तो दत्तेन तया देव्या शिवस्वयं शिवदूती लोकस्मिता तं या सा ख्यातिमागता ते अपि श्रुत्वा वचो देव्या सर्वाख्याता महासुरा अमरसा पूरिता जग्मु यत्र कात्यायनी स्थिता तथा प्रथममेवाग्र सशक्तिरिष्टिभिः स्ववर्षुर्मूर्धमासास्तं देवी ममरार्य सा च तान् प्रहितान् बाणाञ्छूलपरशक्तिपरस्वधान् शीर्षेदलीलयाधात्माता धनुर्मुक्तैर्महर्षिभिः तस्याग्रतस्तथा कालीशीलपातविदारितान् खट्वाङ्गपोथितां सुचारिणः कुर्वती व्यचतता कमण्डलुजलाक्षेपहतवीर्यान् हतोजसा ब्रह्माणि चाकोरचतुर्नयनेन स्मधावति माहेश्वरी त्रिशूलेन तथा चक्रेण वैष्णवी तत्याजङ्घान् कौमारी तथा शक्यातिकोपन ऐन्दिकुलिस्पातेन सत्सो दैत्यदानवा पेतुर्विदारिता पृथिव्यां रुधिरौघप्रवर्षिणा टूर्णप्रहारविध्वस्ता दंष्टाग्रच्छत्वशस्स वाराहमूर्त्या नियन्तपन्तं सचक्रेण च विदारिता नखविदिताराहितां सुचान्या न भक्ष्यन्ति महासुना नारसिंही चचाराजो नादा पूर्णदिवगम्बरा चण्डाटसहस्रसुरैरेसुरा शिवदूतभिदूषिता पेतुर्पृथिव्यां पतितास्तां सचखादाथ सा तदा इति मातृगणं
क्रुधं मर्दयन्तं महासुरान् दृष्ट्वाभ्युपारैर्विविधैर्नदेषु देवारी सैनिका पलायनपरान् दृष्ट्वा दैत्यान् योधुभम्यायो क्रुधो रक्तबीजो महासुर रक्तबिन्दुर्यदा भूमौ पतस्य शरीरतः समुत्पत्यति मेदिन्यां तत्प्रमाणस्तदासुरा युधे च गदापानि विन्ध्यसरक्त्या महासुरा तश्चन्द्रे स्ववर्जेन रक्तबीजमताडयत् कूलीसेनाया हतशासु बहु शुश्राव शोणिता समुतस्थुस्ततो योद्धा अस्त्रद्रुपास्तस्य पराक्रमा यावन्तः पतितास्य तस्य शरीरार्द्रतबिन्दव तावन्तः पुरुषा जातास्तदीर्घबलविक्रमा ये चापि युधुस्तत्र पुरुषा रक्तसम्भव समं मातृभिरत्युग्रशस्त्रपातातिभीषणं पुनश्च वर्जपातेन छद्मस्य शिरो यदा ववा रक्तं पुरुषात् सस्तेतयो जाता सहस्रशः वैष्णवी समरे चैन चक्रेणाभिजिगानः गदया ताडयामास ऐन्द्रितमसुरेश्वरम् वैष्णवी चक्रभिन्नस्य रुधिरस्राव संभवे सहस्रासो जगदव्याप्तं तत्प्रमाणैर्महासुरे शक्त्या जघान कौमारी वाराही च तथासिना माहेश्वरी त्रिशूलेन रक्तबीजं महासुरं स चापि गदया दैत्य सर्वा एवाहनत पृथक् मातृकोपसमाविष्टो रक्तबीजो महासुर तस्या बहुधा शक्तिशूलादिभिः भूर्वि पपातयो वै रक्तो घस्तेनासंचतो सोऽसुरा तैश्चासुरासुरशिखवसम्भूतैरसुरैः सकलं जगत् व्याप्तमासीतो देवा भयमाजमगमुत्तमं तान् विष्णानसुरान् दृष्ट्वा चण्डिका प्राह सत्वरा उवाच कालीं चामुण्डे विस्तीर्णं वदनं कुरु मच्छ अस्त्रापात सम्भूतान् रक्तबिन्दून् महासुरान् रक्तबिन्दु प्रतीच्छ त्वं वक्त्रेणानेन वेगिना भक्षन्ति चरचरणे तदुत्पन्नान् महासुरान् एवमेष क्षयं दैत्यक्षीणरतो गमिष्यति भक्षणमानास्त्वया चोग्रा न चोत्पत्स्यन्ति चापरे इति उक्त्वा तां ततो देवी शूलेनाभिजिगान्तम् मुखेन काली जगृहे रक्तबीजस्य शोणितां ततो असावजाघानाथ गदया तत्र चण्डिकां न चास्या वेदनां चक्रे गदापातो अलिपिकामपि तस्या हतस्य देहातु बहुशुश्राव शोणितं यतस्तत्तद्वक्त्रेण चामुण्डा सम्प्रतीक्षति मुखे समुद्गता यस्या रक्तपातान् महासुरा ताश्च खादाथ चामुण्डा पपोतस्य च शोणितं देवी शूलेन वज्रेण वानरसिभिर्निष्टिभिः जघान रक्तबीजं तं चामुण्डापि शोणितं सपपात महे पृष्ठे संस्त्रसङ्घसमाहता निरस्तश्च महीपाल रक्तबीजो महासुर ततस्ते हर्षमतुलमवापुस्त्रिदशा निपा तेषां मातृगणो जातो नर्नताशृङ्ग मदोद्धृता ओम श्रीमार्कण्डेय पुराण सावर्णिके मनवंतरी देवी महात्म्य रक्तबीजो नाम वधो नामो अष्टमो अध्यायः। ओम नमो अध्याय निशुम्भवध। ओम बन्धुकाकाञ्चननिभं रुचिराचमालं पाशाकुशोच वरदां निजबाहुदण्डे बिभ्राणमिन्दुसकलाभरणं त्रिनेत्रमर्धाम्बिकेशमनिशं वपुराश्रयामि। ओम राजोवाच विचित्रमिदमाख्यातं भगवन् भवता मम देव्याश्चरितमाहात्म्यं रक्तबीजवधाश्रितां भूयश्चेच्छाम्यहं श्रोतुं रक्तबीजेन निपातिते चकार शुम्भो यत्कर्म निशुम्भस्य शातिकोपन। ऋषिरुवाच चकारकोपमतुलं रक्तबीजे निपातिते शुम्भासुरो निशुम्भश्च हतस्य वनेश शाहवे हन्यमानं महासैन्यं विलोक्यामर्षमुद्वहन् अभ्यधावति शुम्भोऽथ मुख्यायासुरसेनया तस्याग्रस्तस्तस्था पृष्ठे पार्श्वयोश्च महासुरा सन्दष्टुष्टपुटा क्रुधा हन्तु देवीमुपाययु आजगाम महावीर्य शुम्भोऽपि स्वबलैर्वृता निहन्तुं चण्डिकां कोपा कृत्वा युद्धं तु मातृभिः ततो युद्धमतीं वासीदेव्या शुम्भनिशुम्भयो सर्वर्षमतीमोग्र मेघयोरिव वर्षतो
चिचेदास्ताक्षरास्ताभ्यां चंडिका स्वसरोत्करे ताड्यामास चांगेषु शस्त्रो घैरसुरेश्वरो निशुम्भो निशितं खड्गं चर्मचादाय सुप्रभम् आताड्यन्मूर्धिनि सिंहं दिव्यावाहनमुक्तमं ताडिते वाहने देवी क्षुरप्रेरणासितुमुक्तमं निशुम्भ्यासु शिचेद चर्मचाप्यष्टचन्द्रकं छिन्ने चर्मणि चण्डे खड्गे च शक्तिं चिक्षेप्सो असुर तां पयस्य द्विधा चक्रे चक्रेणाभिमुखागतां कोपाध्यमातो निशुम्भो अथ शूलं जग्राह दानव आयाता मुष्टिपातेन देवी तच्चापचूर्णयत अविद्याता गदां सोऽपि क्षेप चण्डिकां प्रति सापि देव्या त्रिशूलेन भिन्ना भस्मत्वमागत ततः परशुहस्तं तमायन्तं दैत्यपुङ्गवम् आहत्य देवी बाणो घैर्पात्यत भूतले तस्मिन् पतिते भूमौ निशुम्भे भीमविक्रमे भ्रातृतीव सक्रुधः प्रययो हन्तुमम्बिकां सरथस्तस्थात्युच्चैर्गृति परमायुधे भुजैरष्टाभिर्व्याप्य शेषं बभो नभः तमायान्तं समालोक्या देवी शङ्खमवादयात् या शब्दं चापि धनुश्चकारातीव दुःसहं पूरायामास ककुवो निजघण्टास्वनेन च समस्तदैत्यसेनायां तेजोवधविधायिना तथा सिंहो महाना दैत्यस्याजिते भय महामदे पूरयामास गगनं गां तिथे ददिशो दशा तथा काली समुत्पत्य गगनं क्षमां ताड्यात् कराभ्यां तन्निनादेन प्राक्स्वानास्ततिरोहिता अट्टहाससमशिवं शिवद्युति चकारः तैशब्दसुरास्तस्यो शुम्भकोपं परं ययो दुरात्मस्तिष्ठतिष्ठेति व्याजहाराम्बिका यदा तदा जयति अभिहितं देवैकाराकांक्षि संस्थिते शुम्भेनागत्य या शक्तिमुक्ता ज्वालाति भीषणा आयान्ति वहिनी कूटाभासा निरस्ता महोल्क्या सीनादेन शुम्भस्य व्याप्तं लोकत्रयान्तरं निर्घातनिस्वनो घोरो जित्वान्वनीपते शुम्भनिताङ्क्षणा देवी शुम्भस्तत्प्रहिताङ्क्षणा चिचेदस्वशरैर्सुरुगे सत्सोऽत सहस्रशः ततः सा चण्डिका क्रुधा शूलेनाभिजगान्तम् स तदाभिहतो भूमौ मूर्छितो निपपातः ततो निशुम्भ सम्प्राप्य चेतनामात्मकारमुक आजघाना शरैर्देवी कालीं केसरिणीं तथा पुनश्च कृत्वा बाहुनामयुतं तनुजेश्वर चक्रायुधेन दितिजश्चादयामास चण्डिकां ततो भगवती क्रुधा दुर्गातिनाशिनी छिछेद तानि चक्राणि स्वशरे सायकांशतान् ततो निशुम्भो वेगेन गदामादय चण्डिकाम् अभ्यधावत वै हन्तुं दैत्यसेना समावृता तस्यापतत एवासु गदां चिच्छेद चण्डिका खड्गेन शीतधारेण स च शूलं समाददे शूलहस्तं समायान्तं निशुम्भमर्मार्दनं हृदि विव्याधशूलेन वेगाविद्वेन चण्डिका भीनस्य तस्य शूलेन हृदयानिशितो अपर महाबलो महावीर्य तिष्ठति पुरुषो वदन् तस्य निष्कामतो देवी प्रहस्य स्वनं ततः श्रीशेषदक्ष खड्गेन ततो सावपतद्भुवि तदा सिंहखसचख्वादोग्रं दष्टाच्छुन्ननपशिरोधरान् असुरास्तास्तथा काली शिवद्युति तथा परान् कौमारी शक्तिनिर्भन्ना केचिन्नेसुरमहासुरा ब्राह्मणी मन्त्रपूतेन तोयेनान्यनिराकृता माहेश्वरी त्रिशूलेन भिन्नापेतुस्थापरे वाराही टुण्डघातेन केचिचूर्णीकृता भुवि खण्डं खण्डं च चक्रेण वैष्णव्यादानवा कृता व्रजेन विषेन्द्रिहस्ताग्रविमुक्तेन तथा परे केचिद्विनेसुरसुरा केचिन्नष्टा महावता भक्षिताश्चापरे काली शिवद्युति मृगाधिपे ओं श्री मार्कण्डेय पुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी महात्म्ये निशुम्भवधो नाम नवमोऽध्यायः ओं दशमोऽध्यायः ओं उत्पत्तिहेमरुचिरचां रविचन्द्रवहिनी नेत्रां धनुसरयुताङ्क सपाशशूलं रम्ये भुजश्च ददतीं शिवशक्तिरूपां कामेश्वरीं हृदिं भजामि धृतेन्दुलेखाम् ओं ऋषिर्वाच निशुम्भं निहन्तं दृष्ट्वा भ्रातरं
प्राणसंमितं हन्यमानं बलं चैव शुम्भक्रुद्धो अब्रीवीद्वच बलावले पादृष्टे त्वं मा दुर्गे दुर्गरमाव अनायासं बलमाश्रित्य युध्यस्य यातिमानिनी। देवी उवाच ऐकेवाहं जगत् यत्र द्वितीया काममापरा पश्यैतादृष्टमयैव विशन्त्यो मोदीभूतय ततः समस्तास्तस्ता देव्यो ब्राह्मणी प्रमुखालयं तस्या देवास्तनो जग्मुरे कैवासि दाम्बिका। देवी उवाच अहं विभूत्वा बहुभिरीय रूपैर्दाय स्थिता तत्संहृता मयि कैव तिष्ठामि आजो स्त्रो भव। ऋषि उवाच ततः प्रवृत्य युद्धं देव्या शुम्भोऽस्य चोभयो पश्यन्तां सर्वदेवानां सुराणां च दारुणा सर्ववर्षेषिते शस्त्रास्त्रश्चैव दारुणे तयोर्युद्धभूर्दुभुव सर्वलोकभयङ्करं दिव्यानस्त्राणि सत्स्वमुचे यान्यथाम्बिका वभञ्ज तानि दैत्येन्द्रस्तत्प्रतिघातकर्तृभिः मुक्तानि तेन चास्त्राणि दिव्यानि परमेश्वरी वभञ्जलीलयो गुरुः कारोच्चारणादिभिः ततस्तैर्देवी माक्षदायत सोऽसुरा सापि तत्कुपिता देवी धनुश्चिछेदस्येषुभिः छिन्ने धनुषि दैत्येन्द्रस्तथा शक्तिमथाददे चिच्छेददेवी चक्रेण तामप्यस्य करे स्थिता तथा खड्गमुपादाय सत्चन्द्रं च भानुमत् अभ्यधावत देवीं दैत्यानामधिपेश्वर तस्यापातत एवासु खड्गं चिच्छेद चण्डिका धनुर्मुक्ते सतैर्बाणैर्चर्मचार्ककरामलाम् हताश्च स तदा दैत्यश्चिच्छन् धन्वां विसारथि जग्राहमुद्गरं घोरमम्बिका निधनोघत चिच्छेदापतस्तस्य मुद्गरं निस्तेवसर तथापि सोऽन्ध्यभावधावतां मुष्टिमुगम्य वेगवान् समुष्टिपातयामास हृदये दैत्यपुङ्गव देव्यास्तं चापि सा देवी तेलेनोरस्य ताडयत् तल्प्रहाराभिहतो निपपात महीतले सदैत्यराजः सहसा पुनरेव ततोत्थिता उत्पत्त्यश्च परिगृह्य चरदेवी गगनमास्थिता तत्रापि सा निराधारा युधे तेन चण्डिका युधं निखे तदा दैत्यश्चण्डिका च परस्परं चक्रतुं प्रथमं सिद्धमुनिर्विनयसमयकारकं ततो नियुद्धं सुचिरं तुहित्वा तेनाम्बिका सह उत्पात्य भ्राम्यामास चिक्षेप धरणीतले सक्षिप्तो धरणीं प्राप्य मुष्टिमुगम्य वेगिता अभिधावत दृष्टात्मा चण्डिका निधनेच्छया तमायान्तं ततो देवी सर्वदैत्यजनेश्वरम् उजगत्यां पातयामास भित्त्वा शूलेन वक्षसि सर्गतासु पपातोर्व्यां सेवी देवी शूलाग्रवीक्षत चालयन सकलां पृथ्वीं शाब्दिद्वीपां समपवर्तां ततः प्रसन्नमखिलं धत्ते तस्मिन् दुरात्मनि जगत्स्वास्थमति माप निर्मलं चाभवन्नभ उत्पातमेघासोल्का ये प्रयाग्या संस्थे समं ययु सरितो मार्गवाह्यन्यस्ता संस्तपातिते ततो देवगणा सर्वे हर्षनिभरमानसा बभूर्वर्णुह्यते तस्मिन् गन्धर्वाललितं जगु अवाद्यस्तथान्ये नृत्यशुषा प्रसरोगणा बहुपुण्यास्तथा वाता सुप्रभो अधिकवाकर जज्वलुषानज्ञ शान्ता शान्तिदिगजस्तिस्वना। ओम इति मार्कण्डे पुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी महात्म्ये शुम्भवधो नाम 10मो अध्यायः। ओम 11 अध्यायः। ओम बालवर विभूतिमिन्दुकिरीटां तुङ्गकुचां नयनत्रययुक्तां स्मृमुखीं वरदाङ्कुशपाशाभितिकरां प्रभजे भुवनेशीम्। ओम ऋषिरुवाच देव्याः ते तत्र महासुरेन्द्रे सेन्द्रासुरावरिणी पुरोगमास्मतां कात्यायनीं तुष्टुवरिष्ठलाभाद् विकासी वक्त्राब्जविकासिता सा देवी प्रपन्नाति हरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वं तमेश्वरी देवी चराचरस्य आधारभूता जगतस्त्वमेका महीस्वरूपेण यथा स्थितासि अपां स्वरूपस्थित्या त्वैतदाप्यायते कृतसन्मलङ्घवीर्ये त्वं वैष्णवी शक्ति अनन्तवीर्या विश्वस्य बीजं परमासि माया
सम्मोहितं देवी समस्तमेतत् त्वं वै प्रसन्ना भुवि मुक्तिहेतु विद्या समस्तास्तव देवी भेदा स्त्रियः समस्ता सकला जगत्सु त्ववैकया पूरितं वै ततः काते स्तुतिस्तव्य परा परोक्ति सर्वभूता यदा देवी स्वर्गमुक्तिप्रदायिनी त्वमस्तुतास्तुते का वा भवन्तु परमोक्तयः सर्वस्य बुद्धिरूपेण जनस्य हृदि संस्थिते स्वर्गापवर्गदे देवी नारायणी नमोऽस्तु ते कलाकाष्ठादिरूपेण परिणामप्रदायिनी विश्वस्योपरोक्तो शक्ते नारायणी नमोऽस्तु ते सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तु ते सृष्टिस्थितिविनाशानां शक्तिभूते सनातनी गुणाश्रये गुणमये नारायणी नमोऽस्तु ते शरणागतदीनार्तपरित्राणपरायणे सरस्वती हरे देवी नारायणी नमोऽस्तु ते हंसयुक्तविमानस्ते ब्रह्माणी रूपधारिणी कौसंभच्छरिके देवी नारायणी नमोऽस्तु ते त्रिशूलचन्द्राहिधरे महावृषभवाहिनी माहेश्वरी स्वरूपेण नारायणी नमोऽस्तु ते मयूरकुकुटविवृते महाशक्तिधरे अनगे कौमारी रूप संस्थाने नारायणी नमोऽस्तु ते शंखचक्रगदासागर कीर्ति परमायुधे प्रसिद्ध वैष्णवी रूपे नारायणी नमोऽस्तु ते कीर्तोग्र महाचक्रे दंष्टोदधृतवसुन्धरे वराहरूपिणे श्रीवे नारायणी नमोऽस्तु ते नृसिंहरूपेणो ग्रेण हन्तुं दैत्यान् कृतोगमे त्रैलोक्यत्राणसहिते नारायणी नमोऽस्तु ते किरीटिने महाव्रजे सहस्रनयनोज्ज्वले वृत्प्राणहरे ऐन्द्री नारायणी नमोऽस्तु ते शिवदूतीस्वरूपेण हतदैत्ये महाबले घोररूपे महारावे नारायणी नमोऽस्तु ते दंष्टाकरालवदने शिरोमालाविभूषणे चामुण्डे मुण्डमथने नारायणी नमोऽस्तु ते लक्ष्मीलज्जे महाविद्ये सधे पुष्टि स्वधे ध्रुवे महारात्रि महाविघ्ये नारायणी नमोऽस्तु ते मेधे सरस्वतीवरे भूतिभाभ्रवी तामसी नियते त्वं प्रसीदेसे नारायणी नमोऽस्तु ते सर्वस्वरूपे सर्वस्य सर्वशक्तिसमन्विते भयभयस्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमोऽस्तु ते एतते वदनं सौम्यं लोचनत्रयभूषितं पातु न सर्वभीतिभ्यः कात्यायनी नमोऽस्तु ते ज्वालाकरालमृत्युग्रमशेषासुरसूदनं त्रिशूलं पातु नो भित्ते भद्रकाली नमोऽस्तु ते हिनस्ति दैत्यतेजांसि स्वेनापूर्यया जगतः सा घण्टा पातु नो देवी पापे भयोन्न सुतानिव असुराश्रिगवसपापाङ्क चर्चितस्ते करोज्ज्वल शुभाय खड्गो भवतु चण्डिके त्वां नता वयं रोगान् शेषान् पहंसि तुष्टा रुष्टा तु कामान् सकलाभीष्टान् त्वमाश्रितानां न विपन्नराणां त्वमाश्रिता हर्ष्यान्तां प्रयान्ति एतत् कृतं एतत्कदनं त्वयाग धर्मद्विषां देवी महासुराणां रूपैरनैकैर्बहुधा मूर्तिं कृत्वाम्बिके तत्प्रकरोति कान्या विद्यासु शास्त्रेषु विवेकदीपे स्वागेषु वाक्यसे येषु च कात्वदन्या ममत्वगर्ति अति महान्धकारे विभ्रामयत्तरेतददिवं विश्वं दक्षांसि यत्रोग्रविशाश्च नागा यत्यारयो दस्युबलानि तत्र दावानलो यत्र तथाब्धिमध्ये ततः स्थिता त्वं परिपासि विश्वं विश्वेश्वरी त्वं परिपासि विश्वं विश्वात्मिका आधार्यसीति विश्वं विश्वेश्वरनघा भवति भवन्ति विश्वाश्रयाये त्वयि भक्तिनम्रा देवी प्रसीद परिपालन्योऽरिभीते नित्यं यथासुरवदाधुनैव सग्गा पापानि सर्वजगतां प्रस्मं नयासु उत्पातपाकजनितांश्च महोपसर्गान् प्रणतानां प्रसिद्धत्वं देवी विश्वार्तिहारिणी त्रैलोक्यवासिनामीडये लोकानां वरदा भव देयुवाच वरदाहं सुरवरं यन्मनसेच्छत तं विनिच्छव
प्रयच्छामि जगतामुपकारकं देवाऊचु सर्वबाधाप्रशमनं त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरी एवमेव त्वया कर्म स्मद्वैरीविनाशनं देयुवाच वैवस्ते अनन्तरे प्राप्ते अष्टाविंशतिमे युगे शुम्भो निशुम्भस्य च वाण्या उत्पत्त्यसे ते महासुरो नन्दगोपगृहे जाता यतुसोदागर्भसम्भवा ततस्तो नाशिष्यामि विन्ध्याचलनिवासिनी पुनरप्यति रौद्रेण रूपेण पृथ्वीतले अवर्तीय अनिष्यासि प्रचितास्तु दानवान् पच्यन्त्याश्च ताननुग्रान् वैप्रचितान् महासुरान् रक्तादन्ता भविष्यन्ति दारिमी कुसुमोपमा ततो मा देवता स्वर्गे मर्त्यलोके च मानवा अस्तुवन्तो व्याहरिष्यन्ति सततं रक्तदन्तिका भूयश्च सत्वार्षिक्या मनाविष्ट्यान्मनभसि मुनिभिः सत्स्तुता भूमो सम्यविषायाम्यभ्यो निज तथा सतेन नेत्राणा निरीक्षास्यामि यन्मुनिना कीर्तयन्ति समनुजासक्ता क्षमिति मां ततोऽहमखिलं लोकमात्मदेहसमुद्भवे भारिष्यामि सुराशाकैराविष्टिप्राणधारके साकं विरिति विख्यातिं तदा व्यास्याम्यहं भुवि तत्रैव वधिष्यामि दुर्माख्यं महासुरं दुर्गादेवीति विख्यातं तन्मे नाम भविष्यति यः पुनश्चाहं यदा भीमं रूपं कृत्वा हिमाचले रक्षांसि भक्षिष्यामि मुनीनां त्राणकारणात् तदा मां मुनयः सर्वे स्तोष्यत्यान्यमूर्तय भीमादेवीति विख्यातं तन्मे नाम भविष्यति यदारुणाख्यश्लोके महाबाधं करिष्यति तदाहं प्राम्रं रूपं कृत्वा सङ्खेष्टपदं त्रैलोक्यस्य हितार्थाय वधिष्यामि महासुरं भ्रामरीति च मां लोकास्तदा स्तोष्यन्ति सर्वतः इति यदा यदा बाधा धानोता भविष्यति तदा वतीर्यां करिष्यामरिसक्षम्यम्। ओं श्री मार्कण्डेय पुराणे सावर्णिके मनवंतरी देवी महात्म्ये देव्या स्तुति नामको अध्यायः एको अध्यायस्याः द्वादशो अध्यायः। ओं विगुगादाम समप्रभा मृगपतिस्कन्धस्थितां भीषणां कन्याभिकरवालखेटविलसद्वस्यातिभिरासेवितां हस्तैश्च कदा शिखेटविशिशाखां सचापं गुणं तर्जनीं विभ्राणामनन्यात्मिकां शशिधरां दुर्गां नेत्रिनेत्रां भजे। ओं देवी उवाच एभिस्तवश्च मां नित्यं स्तोष्यते या समाहिता तस्याहं सकलां बाधा नाशिष्यामि संशयम्। मधुकैटभनाशं च महिषासुरघातनां कीर्तयन्ति एतद्वद्बद्धः शुम्भनिशुम्भयोः अष्टम्यां च चतुर्दश्यां च नवम्यां चैकचेतस श्रूयन्ति चैव मे भक्त्या मम महात्म्यमुत्तमं न तेषां दुष्कृतं कृष्णतो दुष्कृतो न चापदा भविष्यन्ति न दारिद्र्यं न चैवेष्टिवियोजनं शत्रुतो न भयं तस्य तु वानराजत न शस्ता न रतो योगात् कदाचित् सम्भविष्यति तन्माहात्म्यं पठितव्यं समाहिते श्रोतव्यं च सदा भक्त्या परं स्वस्त्यस्य सतनं हि ततः उपसर्गान् शेषास्तु महामारी समुद्भवान् तथा विविधमुत्पातं महात्म्यं समयमेनम एतत् पठेत सम्यङ् नित्यमायतने मम सदा न तद्विमोक्ष्यामि सान्निध्यं तत्र मे स्थितं बलिप्रदाने पूजायामग्निकार्ये महोत्सवे सर्वममैतचरितमुच्चार्यं साव्यमेव च जानता वापि बलिपूजां तथा कृतां प्रतीक्षिष्याम्यहं प्रीत्या बहिर्होमं तथा कृतं शरत्काले महापूजा क्रियते या च वार्षिकी तस्यां ममैतमाहात्म्यं श्रुत्वा भक्तिसमन्वितः सर्वबाधा विनिर्मुक्तो धनधान्यसुतान्वितः मनुष्यमत्प्रसादेन भविष्यति न संशयः श्रुत्वा ममैतमाहात्म्यं तथा चोत्पत्त्य शुभा पराक्रमं च युद्धेषु जायते निर्भयः पुमान्
रिपुः संक्षयं यान्ति कल्याणं चोपभगते नदन्ते च कुलं पूषां महात्म्यं मम शृण्वताम्। शक्ति शान्तिर्कर्मणि सर्वतः तथा दुःस्वप्रदर्शने ग्रहपीडासु चोग्रासु महात्म्यं शृणुयान् मम उपसर्गा समं यान्ति ग्रहपीडा च दारुणा दुःस्वप्नं च निर्भिदिष्टं स्वस्वप्नमुपाजयते बालग्रहाभिभूतानां बालानां शान्तिकारकं सङ्घातभेदे च निर्णां मैत्रीकरणमुत्तमं दुरितानां शेषाणां बलहानिकरं परं रक्षोभूतपिशाचानां पट्टनादेव नाशनं सर्वं मम तन्माहात्म्यं मम सन्निधिकारकं पशुपुष्पार्धधूपश्च गन्धदीपस्तथोत्तम विप्राणां भोजनैर्होर्म प्रोक्षिणीर्हर्निशिमम् अन्यश्च विविधे भोगे प्रदानैर्वर्चनेर्हुया प्रीतिमेव क्रियते सास्मिन् कुत्सुचरिते सुते सुतं हरति पापानि तथारोग्यं प्रयच्छति रक्षां करोति भूतेभ्यो जन्मनां कीर्तनं मम उद्देशु चरितं यन्मे दुष्टदैत्यनिर्वहणं तस्मिन् श्रुते वैरीकृतं भयं पूषां न जायते युष्माभिरस्तु ततयो याश्च ब्रह्मर्षिभिः कृता ब्रह्मणा च कृतास्तास्तु प्रयच्छन्ति शुभां मतिम् अरण्यप्रान्तरे वापि दावाग्निपरिवारितः दस्युर्भिर्वावृतः शून्ये गीतो वापि शत्रुभिः सिंहव्याघ्रानुयातो वा वने वा वनहस्तिभिः राज्ञा क्रोधेन चाज्ञप्तो वध्यो बन्धगतोऽपि वा आघूर्णितो वा वातेन स्थितः पोते महार्णवे पाल्पतस्तु चापि शस्त्रेषु संग्रामे विस्तारुणे सर्वबाधासु घोरासु वेधानभ्यधितोऽपि वा स्मरन्मैतचरितं नरो मुच्यते सङ्कटात् मम प्रभावत् सिंहागदस्यो वैनिरिणस्तथा दूरादेव पालायन्ते स्मरतश्चरितं मम ऋषिर्वाच इति उक्ता सा भगवती चण्डिका चण्डविक्रमा पश्यातामेव देवानां तत्रैवान्तर्धीयते से अपि देवा निरान्तका स्वाधिकारेण तथा पुरा यज्ञभागभुजा सर्वे चक्रुर्विनिहतार्य दैत्याश्च दिव्यानीते शुम्भे देवरिपो युधि जगद्वंशे तस्मिन् मोहोग्रे अतुल विक्रमे निशुम्भे च महावीर्ये शेषापतालमाययु एवं भगवती देवी सा नित्यापि पुनः पुनः सम्भूय कुरुते भूप जगतः परिपालनं तैतनमोयते विश्वं सैवस्विश्वं वसूयते सा याचिता च विज्ञानं तुष्ट्वा रिद्धिं प्रयच्छति व्याप्तं तैत सकलं ब्रह्माण्डं मनुजे सर्व महाकाल्या महाकाले महामारी स्वरूपया सैवकाले महामारी सैवसृष्टि भवत्यजा स्थितिं करोति भूतानां सैवकाले सनातनी भवकाले निर्णाम सैव लक्ष्मी विद्धि पदार्गृहे सैवाभावे तथा लक्ष्मी विनाशायोपजायते स्तुता संपूजिता पुष्पैर्धूपगन्धादिभिः स्थिता ददाति वित्तं पुत्ता च मतिर्धर्मे गतिं शुभा ओम इति मार्कण्डेय पुराणे सावर्णिके मनवंतरी देवी महात्म्ये फलस्तुति नाम 12वाध्यायः। ओम 13वाध्यायः। ओम बालार्कमण्डलाभासं चतुर्बाहुं त्रिलोचनां पाशाङ्कुशवराभिर्धारयन्तीं शिवां भजे। ओम ऋषिर्वाच एतते कथितं भूप देवी महात्म्यम् उक्तम् एवं प्रभावा सा देवी यदं धारयते जगतः विद्या तथैव क्रियते भगवद्विष्णुमायया तयात्मोहमेष वैश्यश्च तथैवान्ये विवेकिनः मोह्यन्ते मोहिताश्चैव मोहमेष्यन्ति चापरे तामुपहि महाराजा शरणं परमेश्वरीम् आराधिता सैव निर्णाभोगस्वर्गा परवर्गदा मार्कण्डेय उवाच इति तस्य वचः श्रुत्वा श्रुतः स नराधिपः प्रणिपत्य महाभागा तं ऋषिसंसितव्रतं निर्विण्णमितिमत्वरणे राज्यापहरेण च जगाम सगस्तपसे च वैश्यो महामुने सन्दर्शनार्थमम्ब्याया नदीपुलिन संस्थितः स च वैश्यस्तपस्ते से देवी सूक्तं परं जपं तौ तस्मिन् पुलिने दिव्या कृत्वा मूर्तिं महीमहीं अहर्णां चक्रतुस्तस्यां पुष्पधूपाग्निर्तर्पणे निराहारो यताहारो तन्मनस्को समाहितो ददतुस्तौ बलिं दे चैव निजगात्रा सुगृच्छिता
एवं सर्वमाराधयतो स्त्रीभिर्वैश्य यतात्मनो परितुष्टा जगद्धात्री प्रत्यक्षं प्राह चण्डिका। देवी उवाच यत्पार्थ्यते त्वया भूप त्वया च कुलनन्दन मतस्तत् प्राप्यतां सर्वं परितुष्टा ददामि ततः। मार्कण्डेय उवाच ततोर्वरे निपुराज्यमभिसभ्यस्य न्यजन्मनि अत्रैव च निजं राज्यं हतशत्रुबलं बलात् सोऽपि वैश्यस्ततो ज्ञानं वरेण्युर्विनन्मान स ममेत्यहमिति प्राज्ञा संविवेचितुकारकं। ते उवाच स्वल्पे राहोर्भिनिपते स्वं राज्ये प्राप्स्यते भवान् हत्वा रिपुनः स्खलितं तव तत्र भविष्यति मितश्च भूय सम्प्राप्य जन्मदेवा इव स्ववत सावर्णिको नाम मनुर्भावन भुवि भविष्यति वैश्यवर्य त्वया यश्च वरोऽस्मतोऽभिवाञ्छितः तं प्रयच्छामि संसिद्धये तव ज्ञानं भविष्यति। मार्कण्डेय उवाच इति दत्त्वा तयो देवी यथाभिलषितं वरं बभूवान्तर्हितात्सज्ञो भक्त्या ताभ्यामभीष्टुता। एवं देव्या वरं लब्ध्वा सुरर्थक्षत्रियर्षभ श्रिया जन्म समासाग सावर्णी भविता मनु। एवं देव्या वरं लब्ध्वा सुरर्थक्षत्रियर्षभ श्रिया जन्म समासाग सावर्णी भविता मनु। क्लीं ओं श्री मार्कण्डेय पुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी महात्म्ये सुरर्थ वैश्यरोवर प्रधानं नाम त्रयोदशोऽध्यायः। क्षमा प्रार्थना। अपराध सहस्राणि क्रियन्ते अहर्निशं मया दासोऽस्मीति मां मत्वा क्षमस्व परमेश्वरी। आवाहनं न जानामि विसर्जनं पूजां चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वरी। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरी यत्पूजितं मया देवी परिपूर्ण तदस्तु मे। अपराध शतं कृत्वा जगदम्बेति चोच्चैरेत् यां गतिं समाप्नोति न तां ब्रह्मादयसुरा। सापराधोऽस्मि शरणं प्राप्तस्त्वां जगदम्बिके इदानीमनुकामप्यवपहं यथेच्छसि तथा कुरु। अज्ञानाद्विस्मृते भ्रान्त्या यन्नुमधिकं कृतं तत्सर्वं क्षम्यतां देवी प्रसीद परमेश्वरी। कामेश्वरी जगन्माता सच्चिदानन्दविग्रहे गृहेणाचार्मि मां प्रीत्या प्रसीद परमेश्वरी। गृह्णाति गृहो गोपत्रित्वं गृहाणा स्म कृतं जपं सिद्धिर्भवतु मे देवी त्वत्प्रसादात् सुरेश्वरी। सिद्धिकुञ्जिकास्तोत्रम्। श्री उवाच श्रीदेवी प्रयच्छामि कुञ्जिकास्तोत्रमुत्तमं येन मंत्रप्रभावेन चण्डीजापः शुभो भवेत्। न कवचं नागलास्तोत्रं निकीलकं न रहस्यकं न सूक्तं नापि ध्यानं च न्यासो च वार्चनं। कुञ्जिका पाठमात्रेण दुर्गपाठफलं लभेत् अति गुहितरं देवी देवनामपि दुर्लभं। गोपनीयं यत् प्रयत्नो योनिरिव पार्वती मुहारणं मोहनं वश्यं स्तम्भो न चाटनादिकं। पाठमात्रेण सिद्ध्यते कुञ्जिकास्तोत्रमुत्तमम्। अथ मंत्र ओं ह्रीं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे ओं ग्लौं हूं क्लीं ज्वल स्व ज्वालय ज्वालय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल ओं ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे ज्वल हम सम लं छं फट् स्वाहा। नमस्ते रुद्ररूपिणे नमस्ते मधुमर्दिनि नमः कैटभारिणे नमस्ते महिषार्दिनि नमस्ते शुभहन्त्रे च निशुम्भासुरघातिनि। जागृतं हि महादेवी जपं सिद्धं कुरुष्व मे। ऐङ्कारी सृष्टिरूपाय ह्रीङ्कारी प्रतिपालिका क्लीङ्कारी कामरूपिणे बीजरूपे नमोऽस्तु ते। चामुण्डा चण्डघाती च ऐकारी वरदायिनी विच्चे चाभ्यदा नित्यं नमस्ते मंत्ररूपिणी। धाम धीम धूम धूर्जटे पत्नी वां वीं वूं वाग्धीश्वरी। ओं कां क्रीं क्रूं कालिका देवी सां सीं सुं मे शुभं कुरु। ओं हुं हुंकारूपिणी जम जम जमनादिनी भ्रां भ्रीं भ्रूं भैरवी भद्रवानेते नमो नमः। अंकं चम टम पम सम दम तम पम यम सम वीम दुम वैम हिम हम छम। धिजाग्रम तोटे दीप्तं कुरु कुरु स्वाहा। पां पीं पुं पार्वती पूर्णा खां खीं खूं खेचरी तथा सां सिं सुं सप्तशती सती देव्यां मंत्र सिद्धिं कुरुस्व मे। इदं तु कुञ्जिकास्तोत्रं मंत्रजागृति हेतवे नवभक्ते नैव दातव्यं गोपितं रक्ष पार्वती। यस्तु कुञ्जिकया देवी हीनां सप्तशतीं पठेत् न तस्य जायते सिद्धिररण्यरोदनं यथा। श्रीति रुद्रमाले
गौरी तंत्रे शिव पार्वती संवादे कुंजिकास्तु संपूर्णम। हरि ओम तत्सम। जय माता दी। माँ अपने भक्तों की रक्षा स्वयं करती हैं। नवरात्रा की बहुत बहुत बधाई सबको। जय माता दी। जय माँ।